Hello students, welcome in aptitude video. And in last video you studied the chapter number 5 logical Venn diagram and discuss about the question number 1 and question number 2. So let's start with a new video of reasoning and aptitude for class 7, and next question is question number 3rd. Question number 3rd is number 1 teachers, men and women, and we find the diagram which have correct relationship between teachers, men and women. So first of all we consider number 1 teacher. First person are teachers, second is men, and third is woman. So some teachers are men. Some teachers are men and men are teachers, so that there is some relation. That means two-sided relation, and we show the two-sided relation by the overlapping of two circles. It is the circle represent teacher and it overlap the circle of man. It is called some teachers are men. Next we consider with women. Next is teachers and women. Some teachers are women and some women are teacher. Some teachers are women and some women are teacher. तो यहाँ पर टीचर और वुमेन के बीच में कैसा रिलेशन है? सम रिलेशन. दैट मीन्स टू साइडेड रिलेशन. दोनों साइड से रिलेशन है. जब भी दोनों साइड से रिलेशन होगा तो एक फिगर दूसरे फिगर को ओवरलैप करेगी, क्योंकि उन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज जो है सेम है. सो इट रिप्रेजेंट टीचर and it represent women. Some women are teacher and some teachers are women. So let's consider the correct answer. It represent teacher and it represent the men, and here it represents some teachers are men and some men are teachers. Next it represent women and relation is some relation. Some teachers are women and some women are teacher. So correct picturization representation of this question is this. So we tally with the option A, option B, option C and option D. So our answer match with option B. So correct answer is option B. You understand the question? Next is question number 4. And question number 4 is father, son and grandfather. Now we find the relation between father, second is son and third is grandfather. Let's consider the question number 4. First is grandfather. Second is father. And third is son. Understand? All grandfather are fathers. जितने भी पर्सन ग्रैंडफादर हैं, दैट मीन्स जितने भी मेल दादाजी हैं
वो पहले क्या हैं, फादर्स हैं. सो इट इज कंपल्सरी दैट ऑल ग्रैंडफादर्स आर फादर्स. एंड बट इट नॉट कंपल्सरी दैट ऑल फादर्स आर ग्रैंडफादर. अंडरस्टैंड? जितने भी जो हैं दादाजी हैं वो पहले फादर हैं, क्लियर. लेकिन जितने भी मैन जो हैं वो फादर हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दे आर ग्रैंडफादर आल्सो. वो पापा तो हैं लेकिन वो दादाजी नहीं हैं. सो दैट इट इज़ वन साइडेड रिलेशन एंड वी शो द वन साइडेड रिलेशन. इट इज़ ग्रैंडफादर एंड इट इज़ फादर. Clear? Now we find the relation between father and son. So let's understand. All fathers are son. जितने भी men हैं जो father हैं वो पहले किसी ना किसी के तो son होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके पापा हैं, आपके दादाजी हैं, तो आपके दादाजी जो हैं वो क्या हैं, आपके पापा के पापा. सो दैट मीन्स ये तो कंपल्सरी है, जितने भी दादाजी हैं वो सब किसी ना किसी के तो पापा होंगे. लेकिन अब आपके पापा जो हैं वो ज़रूरी तो नहीं अभी दादाजी, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके बड़े ब्रदर की मैरिज होगी तब जो है वो दादाजी बनेंगे. सो दैट मीन्स इट इज़ वन साइडेड रिलेशन. सेम यहाँ पर जितने भी मैन हैं जो फादर हैं वो किसी ना किसी के सन तो होंगे. जैसे आपके पापा हैं वो आपके दादाजी के सन हैं. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल सन आर फादर. जितने भी बेटे हैं वो सब पापा होंगे. जैसे आप अभी छोटे बच्चे हो, आपके जो बड़ा ब्रदर है अभी उसकी भी मैरिज नहीं हुई, तो दैट मीन्स वो आपके पापा का बेटा तो है लेकिन वो आपका बड़ा ब्रदर किसी का फादर नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज़ वन साइडेड रिलेशन. सेम जैसे यहाँ पर ये सर्कल ग्रैंडफादर को शो हो रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये सर्कल है हमारा फादर का. तो सेम इसी तरीके से इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फादर and it is the representation of son. It is grandfather, it is father, and son are lies between them. So it is both are one-sided relation. Then correct figure is this. Now we tally with this option which option is correct. Here option A, because this circle represent grandfather, this circle represent father, and this circle show the son. It is correct answer of relationship between father, son and grandfather. Here grandfather, father and son, because son is not separate from the father. son जो है वो पापा से separate नहीं है. Clear? and ये भी ज़रूरी है कि वो ओवर तीनों के तीनों जो है टू साइडेड जो है रिलेशन नहीं है, वन साइडेड रिलेशन है. और यहाँ पर क्या है, ये ग्रैंडफादर है, उसने क्या किया, ग्रैंडफादर जो है सम ग्रैंडफादर आर फादर एंड सम आर सन. नो, बिकॉज इट इज टू साइडेड रिलेशन एंड करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 5. नंबर 1 बुक्स, नंबर 2 novels, number 3 dictionaries. So 3 items are number 1 books, number 2 novels, and number 3 dictionaries. Let's understand the concept. All books are not novel. जितनी भी बुक्स हैं सारी की सारी बुक्स नॉवल नहीं हो सकती. आपकी इंग्लिश की बुक है, आपकी हिंदी की बुक है, तो वो नॉवल नहीं है. सो ऑल बुक्स आर नॉट नॉवल, बट ऑल नॉवल्स आर बुक्स. जितनी भी आपकी नॉवल हैं, नॉवल मीन्स सम रीडिंग बुक्स, जितने भी नॉवल्स होंगे वो बुक के फॉर्म में होंगे. क्लियर? तो दैट मीन्स इट इज वन साइडेड रिलेशन, क्योंकि सभी की सभी बुक्स तो नॉवल हो नहीं सकती. अब कुछ बुक क्या होंगी, आपकी इंग्लिश की हैं, कुछ बुक आपकी हिंदी की हैं, कुछ एसएसटी, कुछ साइंस, और कुछ बुक्स जो हैं वो नॉवल्स हैं. तो दैट मीन्स ऑल बुक्स आर नॉट नॉवल.
तो सारी की सारी बुक्स तो नॉवल है नहीं, बट ऑल नॉवेल्स आर बुक्स। जितने भी नॉवल प्रिंट हुए हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं, बुक्स हैं। सो इट इज वन साइडेड रिलेशन, एंड वन साइडेड रिलेशन इज shows here it is books and novels. Some novels are some books. Clear? Next we find the relation between books and dictionary. Same, all books are not dictionary. जितनी भी बुक्स प्रिंट आउट हुई हैं, प्रिंटिंग हुई है, वो सारी की सारी बुक्स डिक्शनरीज तो नहीं हैं। वही सेम आपकी इंग्लिश की बुक सेपरेट है, हिंदी की बुक सेपरेट है, बट ऑल आर नॉट डिक्शनरीज, एंड ऑल डिक्शनरीज आर बुक। जितनी भी डिक्शनरीज प्रिंट आउट हुई हैं, ऑल आर बुक्स। सो इट इज आल्सो वन साइडेड रिलेशन, and we represent the one-sided relation by the inside the second picture. So it is the circle of books and it shows the circle novel, and here it is books and dictionaries are the part of books. So our correct answer become books, and in books some books are novel एंड सम बुक्स आर डिक्शनरीज, क्योंकि यहाँ पर नॉवल और डिक्शनरीज के बीच में भी रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन। नॉवल्स आर रीडिंग बुक्स, बट डिक्शनरीज वी यूज टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सिमिलर वर्ड्स, सो दैट्स वाई देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग बिटवीन द नॉवल्स एंड डिक्शनरीज, सो वी ड्रॉ इट सेपरेट। इट सर्कल शोज नॉवल and this circle shows dictionaries. So our correct answer is find the option. Yes, first is no, because it's shown the some relation, two-sided relation, and in between books, novels and dictionaries there is no two-sided relation, there is one-sided relation. These are showing the separate items. Books are separate, novels are separate, and dictionaries are separate. No relation. It is the figure of no relation, but in these items there is some relation, one-sided relation. Next is the, yes, it is correct answer. This circle shows the, represent the books, and this small circle shows the novels, and this small circle shows dictionaries. And option D, books, it is a circle of books and it is the books of circle of novel, but novels and dictionaries are same, so there is no relation between novels and dictionary. So correct answer is C. You understand the question? Now we read the next question, question number 6. Question number 6 is vegetable, potato and mango. Now we find the similarities, relationship between vegetable, potato and mango. Yeah, let's understand. First item is vegetable, second is potato, and third is mango. First of all, there is no relationship between potato and mango because potato is vegetable and mango is fruit. So there is no relation between potato and fruit. It is the circle of potato and it is the circle of mango. Now we consider the relationship between potato and vegetable and mango and vegetable. First of all, vegetable and potato. What is the relationship between vegetable and potato? All vegetables are not potato. सारी की सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो पोटैटो तो नहीं हैं,
उसमें क्या है, वेजिटेबल्स में लेडी फिंगर, टमाटो, बीन्स, cabbage, these all are vegetables. So it is compulsory that all vegetables are not potatoes. सारी की सारी vegetables तो potato नहीं हो सकती, but all potatoes, जितने भी potato हैं, all potatoes are vegetable. So it is one-sided relation. It is one-sided relation. We show the one-sided relation by drawing the figure inside the second figure. It is the circle of vegetable, and this circle shows the potato. Some potatoes are vegetable. Now we find the relationship between vegetable and mango. Vegetable and mango are different. Vegetable is vegetable, but it is fruit. Fruit are separate. So mango is neither related with potato nor with vegetable. There is no relation, so it shows the separate. So correct relation, correct figure of this question is, it is the circle of vegetable. It shows vegetable, it shows potatoes, and it shows mango, because mango is separated from vegetables and potatoes. There is no relation between vegetables, potatoes with mango. So correct option is no. In this figure all are separate. No, wrong. It is shown interrelated. There is two-sided relation. No. So it shows separately, that means vegetable, fruit, mango and potatoes. It is wrong because mango is not related to vegetable. Now next, this circle shows vegetable and it is the circle of potato, and potato is the part of vegetable, and it is no relationship between potato and vegetable with mango. So correct option is D. Now next question is question number 7. Flower, cauliflower and rose. So find the relationship between flower, cauliflower and rose. So first item is flower, second item is cauliflower, and third is rose. So first of all, consider the flower and cauliflower. There is no relationship between flower and cauliflower because cauliflower is a vegetable. Flower is not vegetable. Clear? Flowers are not vegetable and vegetable is not flower. So that means in both of the item there is no relation. And when the two figures are no relation, then their circles are drawn separately. Now we find the relation between flower and rose. Flower and rose. Let's understand. All flowers are not rose. जितने भी फ्लावर हैं वो सभी रोज तो नहीं हैं. सम फ्लावर्स आर रोज, some are lotus, some are sunflower. So all flowers are not rose, but all roses are flower. ये तो डेफिनेट है. जितने भी रोजेस होंगे वो सब क्या कंसिडर होंगे? फ्लावर कंसिडर होंगे. सो दैट मीन्स देयर इज वन साइडेड रिलेशन, and one-sided relation showed by the two circle inside with another. So this circle shows the flower and this circle represent the roses, and
there is no relationship between cauliflower with flower and rose. So correct option is option number A, because this circle show the flower, middle of the circle shows roses, and there is no relationship between cauliflower. So correct option is A. I hope you understand these questions. Do practice of these questions at your home and revise the sums again. Thank you. Have a nice day.